लोगों को पागल बनाने के लिए कहते हैं हमने 8 न्यू बेल्ट्स बना दी हैं, फॉरेस्ट बेल्ट्स बना दी हैं। अरे भाई, तुम पहले जो 17 ग्रीन बेल्ट्स है उसमें तो कंस्ट्रक्शन अलाउ कर रहे हो। रातों रात आपने कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी, अपनी बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी, और 8 बेल्ट में क्या करोगे तुम? इट्स ऑल होप्स, इट्स जस्ट फूलिंग पीपल, नथिंग शॉर्ट ऑफ फूलिंग पीपल। अगर कोई इस वक्त काम कर सकता है, मैं मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो काम ये कर सकते हैं जो राजा वीरभद्र सिंह जी के वक्त में 17 ग्रीन बेल्ट नोटिफाई हुई थी, उनको ग्राउंड में आइडेंटिफाई करो, उनमें फेंसेस लगाओ, उनके जंगल बचाओ। ये काम है अगर कोई कर सकता है, पर ये गवर्नमेंट समर्थ नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज और हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर इसमें इंटरलिंक चेन लग गई जो वीपी मोहन लगवा गया था, और वीपी मोहन के ऊपर केस कर दिया था गवर्नमेंट ने कि आपने गलत इंटरलिंक चेन लगवा दी, और मैं बिल्कुल बाहर आ गया हूँ उसमें से। मैंने आज तक कोई परचेज नहीं की जिंदगी में, सब डीएफओ करते थे। मेरे ऊपर ये एलिगेशन थी कि इंटरलिंक चेन लगाने में इन्होंने पैसे खाए। मैं कहा और प्रूव इट, कम ऑन, सी इफ आई हैव साइंड ए सिंगल ऑर्डर। ऑल डीएफओज वर डूइंग इट एनीवे। अगर कोई काम करना है, मैं प्रेस के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फॉर हेवन सेक उन 17 ग्रीन बेल्ट्स को ठीक करवाओ, उनके जो बचे हुए पौधे हैं उनको बचाओ, और उनमें जो कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है, पता नहीं किसने की है, लीडर्स ने, वो बंद करवाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया हूँ। ऑल्दो आई हैव सर्व्ड द स्टेट गवर्नमेंट, मुझे पेंशन मिलती है, अब मेरी पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रही है, मैंने बड़ी लॉयल्टी से यहाँ नौकरी की है, सारी सर्विस जंगल बचाने में मैंने लगा दी है। एक एक जंगल मैंने घूमा हुआ यहाँ का नहीं, सारे हिमाचल का। एज सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी 65 फॉरेस्ट के मैंने 165 वीडियोस बनाए हैं खुद एट द एज ऑफ 81, और वो एक प्रोसीजर मैंने एस्टेब्लिश कर दिया कि जंगलों में ऐसे काम करना है, और उसके मुताबिक ये अब काम हो रहा है, क्योंकि मैंने रिकमेंड किया था कि हमें फॉरेस्ट में काम करना चाहिए, साइंटिफिक काम करना चाहिए। अब सवाल ये है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आज कहने के लिए कि जिस गवर्नमेंट में मैंने काम किया है मुझे उसके बारे में कहना पड़ रहा है, और यही रीज़न है कि मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रिक्वेस्ट की है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड मैन। क्यों डिसअपॉइंटेड हूं? कि हिमाचल के फॉरेस्ट, खास करके शिमला के फॉरेस्ट, ये गवर्नमेंट खत्म करने को तैयार हुई है। अब मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं उनको मिला नहीं हूं, पर मैं जो उनके बारे में सुनता हूं वो बड़े धार्मिक हैं, गॉड फीयरिंग हैं, जो करना चाहते हैं कर लेते हैं, और उनका सिर्फ ध्येय एक ही है कि इस मुल्क को हमने आगे ले जाना है। मैं उनके साथ हूं बिल्कुल, एक जगह मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं हूं, और मैं उनको आज अपील करना चाहता हूं इस कॉन्फ्रेंस से कि पहाड़ों की डेवलपमेंट और बठिंडा और पंजाब की डेवलपमेंट में बड़ा फर्क है। पहाड़ों की डेवलपमेंट में जियोलॉजी का फैक्टर होता है, अर्थक्वेक का फैक्टर होता है, स्लोप्स का फैक्टर होता है, एरेटिक रेनफॉल का फैक्टर होता है। पहाड़ों में रिस्क नहीं ली जाती। उनसे मैं हाथ जोड़ के आज अपील करना चाहता हूं, पहाड़ों की डेवलपमेंट के लिए वो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, प्लीज नोट डाउन द नेम, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, ये एक वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है
जो कि पहाड़ों की डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं, और एनजीटी ने भी उनको कंसल्ट किया था, उनको इन्वॉल्व करें। और मेरी दूसरी अपील ये है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये जो शिमला के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के काम कर रहे हैं, इनको इमीडिएटली बंद कर दिया जाए। ये शिमला को स्मार्ट नहीं बना रहे हैं, ये शिमला को स्लम बना रहे हैं। अगर शिमला में कोई काम करने की काम है तो वो एक है, आप भी लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, आप गाड़ियां पार्क करते हैं, फिर लिफ्ट में जाते हैं। कितनी दफा आप बचा रहे हो अपने आप को? 4 दिन पहले मैं गाड़ी के नीचे आ गया था वहां पे। सिपाही बेचारे क्या करेंगे? जो सबसे पहला काम करना चाहिए था स्मार्ट सिटी का, वो करना चाहिए था कि लोग अपनी गाड़ी पार्क करें, आराम से लिफ्ट में चले जाएं। टूरिस्ट आता है, उसको इंप्रेशन मिलता है यहाँ आके कि मेरे पास तो पार्किंग है ही नहीं, यहाँ तो मैं क्रॉस ही नहीं कर सकता। आधे टूरिस्ट वहाँ पे चल जाते हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी। हिमाचल में टूरिज्म है, हिमाचल में टूरिज्म है। ये होटल खाली बैठे रहते हैं। क्यों खाली बैठे रहते हैं? लॉपसाइडेड प्लानिंग, प्रायोरिटीज गलत हैं हमारी। तो अब तो मैं एंड में प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा 2 चीजों के लिए। State government has failed. Despite my meetings with Chief Minister, despite my meeting with Governor, pleading them, requesting them that my only interest is to save Deodars. They treat me very well, but nothing beyond that. I'm very frank. So now my hope is to the Prime Minister, Honorable Prime Minister, who is tackling monetary corruption. Today, sir, I want to give you a new subject. It should be put in a gutter. It should be burnt. It should be torn. Shimla development plan is the root cause of all this, and this has been manipulated. It's not development plan, it's Shimla destruction plan. What development? What is a development in a hill? आप पहाड़ों के लोग रहने वाले हो, अगर पहाड़ों में जंगल नहीं हो तो क्या डेवलपमेंट करोगे आप? You will convert into a desert. शिमला की क्लाइमेट खराब हो गई है। आप देखो बारिश नहीं ठीक तरह से होती, स्नोफॉल नहीं हुआ इस दफा। देख रहे हैं आप क्यों नहीं हुआ? All man-made, and still we are happy. Life is very good. Everybody is enjoying. गाड़ियां मिली हुई हैं, सरकारी प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। अब नई फिक्र पड़ी, गवर्नमेंट कैसे बचेगी? Who is bothered about देवदास? Only VP मोहन। सर, अब दूसरा सवाल ये है कि जब हिमाचल में डिजास्टर हुआ था, पेड़ पौधों को नुकसान हुआ था, तब ये आवाज क्यों नहीं उठी? अब ये आवाज क्यों? तब उठी थी, तब मैंने कहा मैं इस झगड़े में पड़ूंगा नहीं। मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूं, और आज भी मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ना जाओ आप। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, शी वाज टेलिंग मी क्यों जा रहे हो आप? मैं कहा नहीं, आज नहीं मैंने आपकी बात मानी, किसी की नहीं मानी मैंने फैमिली में। सिर्फ मेरी ग्रैंड डॉटर आई है मेरे साथ, वो कहती है नाना जी चलो चलते हैं। और मैं आज आई एम टेलिंग यू, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनके साथ मीटिंग लूंगा और उनको समझाऊंगा कि सर आप बहुत समझदार हैं, बहुत काम करते हैं, तो आप करप्शन को टैकल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर आप एनवायरमेंटल करप्शन को टैकल करिए और हिमाचल लाओ, पहले अड्डा अपना यहाँ बनाओ। हिमाचल शुड बी द सेंटर पॉइंट फॉर चेकिंग environmental corruption. It is a hotbed of environmental corruption. See these photographs again. These buildings are in green belts, and I don't need it. Take it. Sir, this building pictures that you showed, ये इमारत कहाँ है? इसका निर्माण हुआ है नॉल्सवुड के नीचे। किसकी ये इमारत है और क्या? ये मैं नहीं जानता हूँ, आप ढूंढो। आई डोंट वांट टू, मुझे प्लान जब आया सर, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये सारा कुछ मेरा काम नहीं है।
मेरे नोटिस में एक मॉर्निंग वॉकर ने बताया सर वहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है, तो मैं उसको बिलीव नहीं किया। मैंने डिपार्टमेंट से गाड़ी मंगवाई, मैं क्या मुझे ले चलो वहाँ पे। जब मेरा स्टाफ सामने आया वो भाग गया वहाँ से। अभी भी देखो कोई नहीं आया यहाँ डर के, क्योंकि वो डरते हैं। मैं नहीं डरता हूँ क्योंकि मैं सर्विस कर ली है। ये ग्रीन बेल्ट्स में है, डेफिनेटली है। और मुझे सुन लो, मुझे ये बताया गया है कि ये चीफ मिनिस्टर की कोठी है। मुझे नहीं पता है ये है या नहीं है, इसलिए मैं सर्टिफाई नहीं करता, पर बिल्डिंग में देख रहा हूँ ये खड़ी है। कंस्ट्रक्शन सर शिमला डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी के बाद हुई है सर ये? आप पता करो। वाई शुड आई फाइंड आउट? मेरा काम नहीं है। सर ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है is because all this is happening after a Supreme Court decision. Neither central government nor state government, I think, will take any initiative regarding this beyond Supreme Court decision. The main issue is, will you approach for Supreme Court, or what is the solution? How can we go? We have to go to Supreme Court, I think. As much I understand, this all matter because similar development plan, whether construction in green area, all these are happening after Supreme Court decision. So, have you any plan or any suggestion? How can we move forward? My only plan is to seek an appointment with Prime Minister, which I will do in next 10 days. If he doesn't hear me, I am going to Delhi. Courts have been misled. Courts have been given wrong facts. Courts are so much overburdened. They have no time. Even the appeal against this is not going to be heard in public. It is going to be heard in circulation. Supreme Court is not the ultimate law. There is nature also there. Supreme Court is Supreme Court, but Supreme Court में cases देखिए कितने ठीक. How many decisions of Supreme Court are right? This is no excuse. You cannot ruin Simla because I have got my plan approved somehow in a false manner by giving wrong facts. I openly say, Supreme Court has been given wrong facts by the government here. The Advocate General worked overtime to see that this is one, because all the people here have vested interest. They have their properties in the green belts. I don't mince matters. And that's why they are so cool about it. My only concern is, do anything you like. Don't fell deodar trees. You have no right to touch a deodar tree. Supreme Court not is the supreme task. I'll see that Eco Task Force come here, even if I have to go to the Prime Minister. When Mussoorie was being ruined, पता नहीं आपको किसी को पता है कि नहीं है, Mussoorie had reached this stage. At that time, they withdrew the civil administration and put Eco Task Force. Now here two agencies are required. I repeat, Eco Task Force and Himalayan Wadia Institute of Himalayan Geology. They are the only ones who can save Simla. This administration, this set of, I don't know what to say, this set of governance is totally incompetent to handle Simla. They do not appreciate the value of deodar tree. They think that deodar tree cutting is like a rose tree, little realizing that one deodar tree, if you cut, apart from its value, how much oxygen it is giving. Why Simla IQ is so high? Can you give me an answer? Because of deodars. These are our lungs. Now we are entering into our lungs and doing construction. Can we do something more stupid than this? But nobody understands. गवर्नर साहब के साथ मैंने आधा घंटा मीटिंग की, सारा प्रोटोकॉल हो गया, चाय आ गई, ये आ गया, वो आ गया, सब कुछ हो गया, फोटो भी खिंच गई, आगे कुछ नहीं. I stopped going there. Sir, you talked about
against all people, whether they are politicians or bureaucrats who are doing environmental corruption. By environmental corruption, I mean illegal constructions in 17 green belts, illegal constructions beyond the sanctioned floors, illegal constructions with water and electricity supply. State government cannot do it. I am very, very sure now. Because state government is now busy trying to save its government. And it's very unfortunate, let me tell you. Now there is a race going on. Which government should take credit for opening green belts construction? There is a competition going on between the media. BJP says, we started this project. Congress government says, no, we had very good vakils and we have won this case from Supreme Court. And even Supreme Court has been misled. I also want to share in this press conference that I sought a video meeting with Justice Gawai, who is hearing this case. I told his private secretary that I don't want to meet him, but I want a video conference. Once, twice. Yesterday I sent a message. I said, go to dogs. I'm not interested in meeting him. When the judiciary also has been misinformed, misfed, I think now hopes are only on the Prime Minister. So what do I want from the Prime Minister? With folded hands, I won't say want. I want to appeal to the Honorable Prime Minister. Please immediately tackle environmental corruption. And the only work to be allowed should be here. People should be easily able to go to the lift without risking their life. All other projects of smart city are not suited for Simla. They are totally incompatible with a hill station. You are wanting to make ropeways here so that the remaining deodars also finish. You are wanting to do expansions so that all deodars are finished. This will be the biggest folly of the government. And the only person who can save this is our Honorable Prime Minister. I wish Prime Minister sees this or his senior ministers see this and relieve me of this tension. I want to share in this press conference that the worry has gone to this extent that much against the advice of the doctor, I am taking sleeping pill. Why? I'm a happy man otherwise. I have a happy life. My granddaughter is in this. She is married to an IAS officer. We are all doing very well. I'm getting such a handsome pension. But now my worry is today, that's why I come here. How do I see Devdas? Can you help me? My function is only to say Devdas, nothing. This government is not capable of saving Devdas. On the other hand, they have allowed construction in 17 green belts with a vengeance. To give you an example, you walk from Warner House and go up to St. Bede's, right? That is called Forest Road. They have given I am told they have given a permission that above that road and below that road, construction will be allowed, and fooling people, construction will only be allowed where there is no tree felled. Do you think any construction is possible when tree is not felled? Tell me, how many of you will see Jaku forests? Keep it. Now what do I do? When these authorities are not listening to me,
I want to save Deodars because I am very sure if Simla doesn't have Deodars, Simla will finish. It's already finished. Simla has been designed to be a hill city. Simla has been designed to be a Deodar city. But unfortunately, all people, I won't name whether they are politicians, whether they are government officers or anybody, everybody is interested in taking as much of land as possible for illegal construction, for guest houses, because it's a tourist hub. You must have heard, the mayor very proudly says, I have allowed permission of felling 100 trees which have dried. They have not dried. People are drying them. They put acid in their roots, they dry them, then they give application, and then they make sure those trees are felled. Now this is the achievement of the present government. It's really shocking. By felling trees, they are saying that we are doing good work. Now what are the action points which I want press to know? Because government cannot do it here. And in my next part, I am also going to request Prime Minister. Chief Minister is a forest minister. You know it? But he has no time for forests. He is a politician. Naturally, he has to make sure that his government runs. That's more important. He has no time. But portfolio is with him. So who is managing forests? Allah Miya. Municipal corporation. Zero control on illegal constructions. Nobody goes in the field. I am not blaming them. I have seen it myself. We all witnessed in this rainy season what happened in Simla. आपके समरविल में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, कितनी बिल्डिंगें बन गई. We have forgotten. भूल गए हैं कि नेचर का क्या प्रकोप था, कितना नुकसान हुआ, कितने हजार दरख्त हमारे टूट गए. किसी को कोई कंसर्न नहीं है. लाइफ चली हुई है वैसे ही सबके लिए नॉर्मल. पॉलिटिशियन घूम रहे हैं, वो वोटें ढूंढ रहे हैं. किसी को कोई कंसर्न है ही नहीं इस चीज का. मेरा नाम वीपी मोहन है और मेरी 86 ईयर्स की एज है. मैं एक फॉरेस्ट अफसर हूँ. हमारी 3 जनरेशन्स फॉरेस्ट सर्विस में काम कर चुकी है. मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और मैं 1995 में रिटायर हो गया था एज हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. उसके बाद मैंने वर्ल्ड ओवर जाके काम किए, कंसल्टेंसीज की, और 3-4 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी का काम किया. तो आज मैं क्यों आया आपके सामने? मैं 1980 से शिमला में रोज वॉक करता हूं देवदार फॉरेस्ट के बीच में, और मुझे देख के मेरी ग्रैंड डॉटर जो साथ आई हुई है वो मेरे से ज़्यादा वॉक कर रही है. तो पिछले 2 साल से मुझे ये फिक्र पड़ गई है कि मैं अब वॉक कहाँ करूँगा अपनी अब बाकी लाइफ में. राजा वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे और मैं उनका प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर था, तो उन्होंने कहा मोहन साहब कैसे इन जंगलों को बचाया जाए. तो मैंने उनको कहा सर हम 17 ग्रीन बेल्ट्स यहाँ बनाते हैं, उनमें देवदार्स हैं और ट्रीज हैं, उनमें हम इंटरलिंक चेन लगा देते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि ये हमारी जगह है, ये जंगलों की जगह है. शिमला क्वीन ऑफ हिल्स है
क्यों है? क्योंकि यहाँ जंगल है, यहाँ देवदार हैं। देवदार जब एक दफ़ा कट जाता है उसको कोई फॉरेस्ट अफसर दोबारा नहीं लगा सकता। अगर वो लगाएगा वो कामयाब नहीं होगा। मैं अपने घर में देवदार लगवा रहा हूँ। 20 साल का देवदार अभी सिर्फ 8 फुट हुआ है, जबकि उसको माली देख रहा है। तो ये जो ब्रिटिशर्स ने शिमला को चुना था कैपिटल, उसका रीज़न यही था कि ये बिल्कुल यूके की क्लाइमेट है, और क्लाइमेट इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ फॉरेस्ट। क्लाइमेट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। वीरभद्र सिंह जी चले गए, मैं रह गया अकेला। किसके साथ फाइट करूं? प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ। प्रेजेंट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को मिलने जाओ, गवर्नर को मिलने जाओ, चाय पिलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, काम कोई नहीं करते। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि ये जो 17 ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो वीपी मोहन इंटरलिंक चेन लगा गया था, उसको हम रिवाइव करें।